Hello and welcome to EduGyan. So, my fellow aspirants, dear students, let us look some important news articles, some important current affairs regarding your OCS prelims and mains. Without delay, let us start the class. If you would like this initiation, do like, share, and subscribe. So, before starting this lecture, I'm going to announce something. Very soon, we are launching GS courses. Very soon means within 3 to 5 days. Means within this week, we are going to launch GS papers, General Studies papers. ଯୋଉଥିରେ history, polity, economics, environment, okay, तो ये पेपर्स हम डिस्कशन करू बट फेज बाय फेज स्टार्टिंग रु सब पॉलिटी पढ़लु तापर हिस्ट्री तापर इकोनॉमिक्स एमिति फेज वाइज डिस्कशन करू ओके बहुत कम दिन भितर स्टार्ट करू नाउ लेट अस focus on these topics are very important for your upcoming OCS prelims and mains examinations. So the first topic is GS3, General Studies paper 3. Okay, that is your science and technology. कौन अच्छी मिशन स्कॉट. अच्छा, what is स्कॉट? स्कॉट होची स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग. ओके, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग. सो ए लीप इन स्पेस सर्विलेंस. तो स्पेस क्षेत्र रे तो आम गोटे लीप नहीं जीन्स भारत स्पेस क्षेत्र रे गोटे आगु आगु मुवमेंट करछि. तो अर्थ होचे तो कॉन्टेक्स्ट कौन अच्छी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली प्रेज करछंती इंडियन स्पेस स्टार्टअप दिगंतरा जो होची इंडियन स्पेस स्टार्टअप. तो ताकू रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेज करछंती कोन पई ना फॉर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ मिशन स्कॉट. कि से सक्सेसफुल ता जो स्कॉट मिशन थिला उसे लॉन्च कर पारछि. ओके, कि जोटा कि व्हिच मार्क्स ए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस सर्विलेंस. तो जोटा हमको स्पेस सर्विलेंस खातिर गोटे सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देछि इंडिया पे. ओके, सो दिस इज द न्यूज. क्लियर. नाउ स्कॉट. व्हाट इज स्कॉट? स्कॉट मींस स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग. तो ये होछि गोटे दिगंतराज इनाग्रल मिशन थिला. तो जार मेन फोकस कौन थिला ऑन स्पेस सर्विलेंस. ओके, एटा होची वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट. ओके, जो स्कॉट सैटेलाइट एटा होची वर्ल्ड रो प्रथम कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट. ओके, नेक्स्ट किछि एडिशनल देखिबा फैक्ट करा होची. यस, मिशन तार कौन रही. स्कॉट डिजाइन टू ट्रैक resident space object with focus on object as small as 5 cm ensuring safer space operation. Okay, then जो देखिया तरह होची सपोर्ट एंड फंडिंग देखिया. एको मेनली सपोर्ट को ए मिशन पाई सपोर्ट कोरे करछंती ना आदित्य बिरला वेंचर आउ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, जोड़ा मेन एम रही कोन टू ब्लस्टर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्पेस ऑपरेशन. ओके, तो ये जो मिशन स्कॉट गोटे क्रूशियल स्टेप्स इंडिया कैपेबिलिटी इन स्पेस सर्विलेंस. तो भारत रो जो स्पेस सर्विलेंस रो कैपेबिलिटी को गोटे आउट स्टेप फॉरवर्ड आउट आगु बढ़ाई. ओके, कंट्रीब्यूटिंग बोथ नेशनल सिक्योरिटी एंड एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी. तो दिन जिनिस तो गोटे होची कि आबर शो करची गोटे नेशनल सिक्योरिटी को आउटे एडवांसमेंट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी. ओके, तो ये होची कॉन्टेक्स्ट.
ନ୍ୟୁଜ୍ର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆର୍ଟିକଲ yes GS3 environment and ecology discovery of two new goby fish species in कोरिंगा वाइल्ड लाइफ। ओके तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ रे जो दीटा नुआ गोबी फिश स्पेसीज ताकू डिस्कवरी कराई। ओके अच्छा एक्चुअली एटा कोउट अछि आंध्र प्रदेश रे अछि। अच्छा देखो टाइम्स ऑफ इंडिया रहउची एटा सोर्स कौन रही कंटेक्स्ट ना रिसर्चर्स फ्रॉम ZSI Zoological Survey of India have identified two new species of goby fishes। तो से दीटा जो गोबी फिशेस नुआ स्पेसीज को आइडेंटिफाई करछंती कौन कौन ना गोटे होउची हेबिगोबियस हुएबडिल आउट होउची मोगोलोगोबियस टिग्रिडस। ओके ए दीटा कोउटी इन करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश रे। ओके अच्छा तो ये जो दुटा स्पेसीज रहिले न्यू रेकर्ड्स फॉर आंध्र प्रदेश एटा होची दुटा नुआ स्पेसीज। ओके तो दिस स्पेसीज आर प्राइमरीली फाउंड इन एक्सटोराइड रीजियंस पर्टिकुलरली कोउटी ना मैनग्रोव इकोसिस्टम देखा जाती। दे हैव इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस एज दे सर्व एज इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। ओके तो आमे समन को इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस एत भाइबू ना काहे समन को they act as the indicator of the environmental health। okay clear तो ये उस तरह की contest second article now come to the third article important article very important article। this article will help you in GS papers along with essay papers। okay essay paper रे और GS paper रे बहुत हेल्पफुल करियो। कौन अच्छी कंटेक्स्ट GS1 इंडियन सोसाइटी व्हाई आर फर्टिलिटी लेवल डिक्लाइनिंग इन इंडिया। इंडिया रे कौन पई फर्टिलिटी रेट ता डिक्लाइन करूछ। सोर्स कौन अच्छी द हिंदू। ओके तो डिक्लाइन इन context the decline in the fertility level in India is part of broader global demographic trend highlighted the global burden of disease injuries risk factor studies in 2021। okay this analysis points to a significant drop in total fertility rate कि भारत रो जो TFR डिक्लाइन हेछि टोटल fertility rate ताऊ देखाइछि कि जोटा आपनकर डिक्रीज हेछि 1950 रे थिला के जानि 6.18 पर गोटे पर्सन 6टा पिला आता अर्थ सिंपल जिनिस गोटे महिला एवरेज 6टा पिला जोटी जन्म करथिला एबेटा कमी की 2021 रे 1.9 2021 रे होतिला बट जोटा नेशनल एवरेज रखाले जोटा कि 2.1 प्रोजेक्शन कराइला एटा बर्तमान 2.1 लो कमी की 1.9 पहुंचले। फर्दर दैट विल डिक्रीज ये मध्ये आहुरी कमीबो बाय 21 समस्या सुधा कमी की 1.0 पूर्वेनी गोटे ये जो हमदू हमारे एक गोटे रे पहुंची थी कि जोटा कि दैट लीडिंग ए कंसीडरेबल सोशियो इकोनॉमिक इंप्लिकेशंस। क्लियर हो कोन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा तो देखो इंडियास फर्टिलिटी रेट ड्रामेटिकली डिक्लाइन हेछि ओवर द डिकेड। जोटा मु अपन डाटा कहली कि 1950 रे जो फर्टिलिटी रेट थिला 6.18 तो सेटा कमी की बर्तन केते हेछि ना पहुंचलेडी 2.1 हबा करता 1.9 ले पहुंचलेडी। ओके एवं 2100 लोकू एटा कमी की 1.0 पर हेतो। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस डिक्लाइन। बहुत सारा फैक्टर रही ए डिक्लाइन पछरे कोन कोन इनक्रीज्ड फीमेल एम्पावरमेंट कि लोक मानक भितर जो फीमेल एम्पावरमेंट बढ़िया लागिछि। ओके चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स चेंज होने लगे तो दीज आर सम फैक्टर्स। ओके तो फीमेल माने एजुकेटेड होउछंती। ओके दे बिकम एम्पावर्ड होउछंती। ओके सोसाइटल नॉर्म्स बढ़ुची लोक माने बुझुछंती ओके कि हाउ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड खाली एमिति फर्टिलिटी रेट को बढ़े किछि लाभ नाही। ओके ताको भाई एजुकेशन दरकार तापर ताको एम्प्लॉयमेंट दरकार
ओके बहुत सारा जिनिस माने लोक भितर गोटे ये कर क्लियर सो जदि नेक्स्ट आर्टिकल देखा कौन रही यस GS3 अच्छी साइंस एंड टेक्नोलोजी सोर्स हो BBC कौन अच्छी व्हाट इज डार्क ऑक्सीजन साइंटिस्ट मान रिसेंटली डार्क ऑक्सीजन कौन तो ये कर ओके 1 सेकंड डार्क ऑक्सीजन होची it involves the production of oxygen in deep ocean a dark oxygen टा बेसिकली deep ocean ले हमर को हेते प्रोड्यूस होते thousands of feet below the surface dark oxygen टा सी सरफेस रु बहुत सारा डेप्थ भीतर देखते रहते विदाउट नीड फॉर लाइट और फोटोसिंथेसिस या पई डार्क ऑक्सीजन पई कोनोसी लाइट रा आवश्यक अछि द फोटोसिंथेसिस रा आवश्यक अछि दिस डिस्कवरी हैज प्रमोटेड रिसर्चर्स to explore the deepest part in earth ocean for further understanding process तो एई जो डिस्कवरी टा गोटे रिसर्चर मानक भीतर गोटे क्यूरियोसिटी क्रिएट करछि कि सरफेस भीतर को जाइकी डेप्थ भीतर को जाइकी अर्थ ओशन भीतर को जाइकी ए प्रोसेस को बुझिया पे ओके सो डार्क ऑक्सीजन that is generated at the great depth in the ocean that is oxygen is previously produced through photosynthesis but this discovery challenges existing belief about how oxygen is produced underwater just आबर जो बिलीफ थिला से बिलीफ को चेंज कर दी कि अंडर वाटर मध्ये हो कोन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पारछि ओके सो ये थिला हो आपनकर न्यूज आर्टिकल आउ कर देखिया न्यूज आर्टिकल कोन रहिछि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स okay GS2 इंटरनेशनल रेस्टिंग कौन रही एक्सरसाइज ला पोर्सु PIB प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो न्यूज रो कंटेक्स्ट कौन अच्छी PIB सोर्स एटा इंडिजिनियसली डिजाइन आपनकर मिसाइल डेस्ट्रॉयर INS मुंबई ओके currently participating the exercise La pursue a significant multilateral maritime exercise taking place in Indian Ocean region. Okay. तमरो indigenously designed and built guided missile destroyer ता होच कोन INS मुंबई currently से participate करछि गोटे exercise ला परसु गोटे सिग्निफिकेंट मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जोटा IOR रीजन इंडियन ओशन रीजन रे होछ ओके अच्छा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज देखा जाई ए जो ला पोर्स इज ए बाइनियल इवेंट कंडक्टेड बाय फ्रेंच नेवी एटा होछ बाइनियल माने 2 वर्ष को थरे हुए ओके ला पोर्स तो जोटा कि फ्रेंच नेवी कंडक्ट करे प्रति 2 वर्ष को थरे पार्टिसिपेटिंग नेशंस This edition includes participation from various navies. ए वर्ष various country naval force मानक बा नेवी को इनवाइट कराइछि कोन एनहांसिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम कोऑपरेशन कि हम किपरि इंटरनेशनल मैरीटाइम कोऑपरेशन एनहांस करिबो तार मेन एम रहिछि फोकस एरिया कोन रहिछि ना दिस एक्सरसाइज एम्स टू इंप्रूव मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस ओके मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस को क्रिएट करिबा एंड कंडक्ट एडवांस्ड मल्टी डोमेन ट्रेनिंग्स हम कुबेरिया में एडवांस्ड मल्टी डोमेन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाएंगे ओके तो दिस ईयर द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के अछंती आपनकर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इंडोनेशियन नेवी रॉयल मालेशियन नेवी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी रॉयल कैनाडियन नेवी आर ऑब्जेक्टिव कोन रहिछि ना प्राइमरी गोल्स कोन रहिछि ना to exercise to develop a common understanding of maritime challenges तो जो maritime challenge रही different nation भितर ताकू बुझिबा एड्रेस करिबा and enhance cooperation in maritime surveillance क्षेत्र रे आमे किपरि cooperation को enhance करिवु तार मेन एम रही maritime interdiction operations air operations ए सब क्षेत्र आमे किपरि
परस्पर कोऑपरेट करिवो तार मेन एम रही ओके तो आई थिंक the last article of today's lecture GS3 environment ro कौन रही the trouble with the disposing Bhopal's यूनियन कार्बन वेस्ट जो भोपाल यूनियन कार्बाइड जो इंसिडेंट होता मिथाइल आइसोसिनेट गैस ओके टॉक्सिक गैसेस आज ट्रबल हो डिस्पोज करने यूनियन कार्बन वेस्ट को सोर्स द हिंदू on 2 January 2025 authorities of Madhya Pradesh moved 358 tons of hazardous waste from abandoned union carbide facility in Bhopal to the Pitampur industrial area in Dhar district. Okay, तो रिसेंटली এই জানুয়ারি মন্থরে মধ্যপ্রদেশ 358 টন হাজারডাস ওয়েস্ট কু কোন করছি कार्बाइड यूनियन कार्बाइड यूरु भोपाल ताको ट्रांसपोर्ट करा हिची कोड की ना पिथामपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिस लोकेशन फॉलोड डायरेक्टिव फ्रॉम दी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तो एटा एक्चुअली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रो गाइडेंस जे होची ता गाइडलाइन जे होची इशूड ऑन डिसेंबर 2024 जोटा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 3 डिसेंबर 2024 रे गाइडलाइंस जारी करथिले ओके यू नो कि बहुत गोटे भोपाल गैस ट्रेजेडी गोटे बहुत बड़ ट्राजिक इनसीडेंट थिला पाखापाखि 4000 लोक डेथ होता एंड न्यूमरस पीपुल्स आर इंजुर्ड न्यूमरस पीपुल्स ओके तो ये कौन लिखा है द रिलोकेशन ऑफ hazardous waste is a response to a long standing environmental issue yes ये गोटे बहुत बड़ गोटे environmental issue the waste disposal efforts face challenges such as local protest and health concerns regarding incandescent methods okay तो या जो लोकल लोक मार्ग बहुत सारा प्रोटेस्ट रहउची कि गोटे हेल्थ कंसर्न इशू तो मध्य प्रदेश कोर्ट हाई कोर्ट इंटरव्यू करची यूरे कि ताकि पूरा सेफली डिस्पोज करिवो ओके स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड भितर सेफली डिस्पोज करा जीवो से गाइडलाइन देछि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ओके सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जहाँ मुझे डिस्कसन कली जदि आप लेक्चर टी भल लगे डेफिनेटली लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एवं मु प्रत्येक दिन एमती भल भल कंटेंट आपण पाखे पहुँच पारे कि जोटा कि आपंकर अपकमिंग प्रिलिम्स और मेन्स बहुत हेल्पफुल हो पार कंटिन्यूअसली रेगुलरली मु वीडियो अपलोड कर चलती सिर्फ ओनली फॉर यू बाय स्टूडेंट्स प्लीज आपण मैंने लेक्चर को देखु एवं निजर ज्ञान परिसर को वृद्धि करातु एवं आपंकर जो कमिंग एग्जामिनेशन ले करंट अफेयर्स मस्ट ओके केवल यूपीएससी पाए नुहे जो मैंने यूपीएससी प्रिपेरेसन कर स्टेट लेवल बा सेंट्रल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर कर सो करंट अफेयर्स मस्ट ओके अब कहली बहुत कम दिन भितर जीएस पेपर आनुंट जहाँ पे डिस्कसन कर ओके सो आज ये जय हिंद जय जगन्नाथ